ओके वरुण, तो इस इंटरव्यू को भी हम लोग कंटिन्यूअस रिव्यूड रखेंगे, ठीक है? ओके और चूंकि मतलब हमारी पहले भी बातचीत हो रखी है, तो मतलब टू असेस सम ऑफ योर क्वालिटीज I'll be having some question which will be based on our previous discussion. तो लाइक आई टोल्ड यू कि कल मैं जब तुमसे बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि व्हाई डोंट यू ओपन योर क्लाउड किचन एट माय प्लेस। तुम्हें इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें एक को फाउंडर की प्रॉब्लम है, बिकॉज यू नो और यू आर गुड एट किचन वर्क, बट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड वो वाले डोमेन में तुम्हें प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी वाले डोमेन में। तो आई टोल्ड यू दैट आई विल बी गिविंग ऑल द सपोर्ट एज एन को फाउंडर, and even you don't have to look for place, है ना? I have मतलब entire big space in heart of the Delhi where you can basically get, there are lots of offices there where you can basically get lots of order. तो एक तो वो हो गया, और दूसरा you want to do MBA from whatever college that you are looking for, है ना? जो अभी जिस भी प्रोग्राम के लिए हम इंटरव्यू दे, so can you compare these two options? पहले तो प्रोज एंड कॉन्स पे बताओ कि दोनों के दो दो प्रोज एंड दो दो कॉन्स बताओ, एंड देन कंपेयर द बोथ ऑफ द ऑप्शंस. So first I would like to go for the pros for if I pursue an MBA like right now only. So the first pro for that will be like I will be able to get a better exposure of the industry, that and even I will get an opportunity to work for an organization where I can learn and enhance my skills and know तो about पॉइंट business. नंबर 1 यहाँ पे यहीं से इम्प्रोवाइज करना. देखो, जब हमने बोला कि एमबीए करने जाओगे और जब हमने बोला कि ये बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करो, तो प्रोज फॉर दो. तो जब जब तुमने बोला कि प्रोज फॉर द एमबीए आई विल टॉक, एक तो प्रो प्रो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट. आई विल तुम यू कैन have said the advantages of doing an MBA. तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जब आप एमबीए करते हो, यू डोंट गेट एक्सपोजर फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज. एक्सपोजर तब होता है व्हेन यू वर्क इन इंडस्ट्री. दूर दूर से उसकी केस स्टडी पढ़ना, उसका वो एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज बोल सकते हो, नॉट द एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्री वर्किंग, ठीक है? तो जैसे आप समर ट्रेनिंग करते हो तो वहां आपको कुछ मिलता है, या फिर आप पैरेलल कोई प्रोजेक्ट करते हो तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है. द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इन बिजनेस एमबीए प्रोग्राम इज द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग डन बाय बिजनेस organizations, है ना? And how they are basically running a large scale supply chain or large scale business with the help of technology and different department which has people in it. ठीक है? तो ये लर्निंग के लिए आप जा रहे हो, तो आप एक्सपोजर बोल के एमबीए प्रोग्राम को, एक तो वो गलत है अपने आप में. तो ये हुआ, तो पहला तुम ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है, जिसको मैंने उसमें वो कर दिया. सेकेंड पॉइंट यू टोल्ड कि फर्स्ट एंड ऑल्सो यू वांट टू वर्क फॉर सम अदर इंडस्ट्री. ये क्यों बोलना है तुम्हें? मतलब सम अदर इंडस्ट्री बोलने का मतलब ये है कि यू स्टिल हैव द सेम थिंग इन योर माइंड बट यू स्टिल वांट टू गो फॉर अदर इंडस्ट्री. ये तो बहुत गलत है. मतलब यू कुड हैव Not सेड, other industry, but basically in a food processing हाँ, industry. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, मतलब हम इसी डोमेन के किसी इंडस्ट्री में हम कुछ दिन काम करना चाहते हैं. ये दो एडवांटेजेस हो गए, चलो. और दो डिसएडवांटेज बताओ. For the MBA. हाँ, जब उसकी स्टार्ट किया तो उसी से बताओगे ना. So the disadvantage for an MBA would be like the opportunity cost which I will lose in these 2 years. Like if I am capable to start my business and turn my idea into a sustainable system, then I will be able to save that cost and will be able to pursue my business from now चलो on. ठीक है, फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट बताओ. दिस इज गुड, मतलब दिस इज ओके. Sir, with your guidance, I will be able to do नहीं, ये like तो उसका डिसएडवांटेज बताना है ना. MBA. अभी एमबीए का डिसएडवांटेज, तुम क्वेश्चन कैसे भूल जा रहे हो? अभी एमबीए पे बात कर रहे हो. एमबीए के दो एडवांटेजेस हो गए, पहला डिसएडवांटेज हो गया, सेकंड बताओ. Second will be like I'll be able to save a lot of amount without doing an MBA, so I can put that amount into my business only. चलो ठीक है, ये भी जस्टिफाइड है. मतलब ये मुझे, मैं कुछ और भी सजेस्ट कर सकता हूँ. जैसे तुम ये भी बोल सकते हो कि इन एन एमबीए you learn a lot about many industries, many subjects, and probably the core work that you want to do ahead and down the line or 10 years down the line, उसके लिए जो ओवरऑल नॉलेज है वो इससे बहुत कम की जरूरत पड़ सकती है. तो मतलब एक पूरा हॉरिजन बढ़ाना, दैट इज गुड फॉर माय पर्सनालिटी और माय एपेटाइट फॉर नॉलेज.
बट अगेन somehow I'll be मतलब होता है ना कि उसको वो बाद में जाके वो नैरो डाउन हो ही जाना है, तो ये भी बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा वाला भी आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ I'll you will go back to the option that I have given you कि मतलब वहां पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल ऑप्शन है, आई विल बी द को-फाउंडर, आई विल इन्वेस्ट सम मनी इन दैट बिजनेस, आई विल गिव यू क्लाउड किचन स्पेस, है ना, एंड आई विल आल्सो हेल्प यू इन ऑल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ टेल मी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड यू कैन नॉट टेल द एडवांटेज व्हिच आई एम गिविंग यू, मतलब उसी नंबर में नहीं बोलोगे ना, तो जस्ट गिव मी टू एडवांटेज टू डिसएडवांटेज। Advantages of work, like working, मतलब doing business right now. doing business right now. Sir, can I put the disadvantage part in the advantage only? Like, you can tell, मतलब I'll just later, okay. सुनने के बाद बताता हूँ। So, sir, first point will be like the money that I will save without doing an MBA, that I can use that money in my business only. And अच्छा, जो वहाँ के डिसएडवांटेज था वहाँ पे, हाँ तो ये कर सकते हो, कोई बात नहीं है। And second will be the guidance that I will get from you, who has a background in the management sector only. So it will definitely help me to expand my business after some point. ठीक है, अब डिसएडवांटेज बताओ। So disadvantage will be like I just want to be like on my own only. Like if I don't want any other co-founder, like sometimes it get difficult for me, for anyone to find an appropriate choice as a co-founder. तो वो तो यहाँ पे तो आई एम ऑलरेडी देयर ना, मतलब इफ इट इज चॉइस, इफ इट इज योर चॉइस, तभी तो तुम मुझे पिक करोगे ना। First, I have to do the market research, and then I'll decide that ये if I डिसएडवांटेज नहीं है ना ये। तो सोच नहीं आ रहा डिसएडवांटेज का। चलो सोचो, ठीक है, मतलब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। So Varun, tell me about your future goals. मतलब like I'll ask again that question after MBA. So MBA will help me to explore many other to explore more options in my industry only. Like I was restricted to hospitality sector only in the service industry, but I want to explore more like the manufacturing part as अच्छा, well. मैंने क्या पूछा था, फिर से बताओ। एक तो तुम्हारा कुछ नेटवर्क खराब है ना, आवाज गायब हो जा रही है कुछ। क्या पूछा था मैंने, बताओ। गोल मैंने पूछा था व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशन बेस्ड ऑन दिस एमबीए, ठीक है, या आफ्टर द एमबीए। तो फ्यूचर एस्पिरेशन में एस्पिरेशंस का नाम बताओ ना, गोल का नाम बताओ कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू जॉइन अ कंपनी व्हिच इज इन फूड सेक्टर, देन ऐसे करके बताओ सीधा। तुम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, पता नहीं और क्या बात कर रहे थे। मतलब फिर वही बात होगी, जो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और फिर रिप्लाई करो। तो नाउ टेल मी योर फ्यूचर एस्पिरेशंस आफ्टर द एमबीए। I want to set up my own manufacturing वो बहुत plant. बात का हो गया ना, पहले तो तुम नौकरी करना चाह रहे थे ना। सर मैं बोलने लगा like after having a good experience and exposure in the food processing industry itself after completing my MBA. And it totally depends on when my idea will convert into a sustainable system. So to develop that system, I want to pursue an MBA, which will help me to broaden my avenues. Okay. Okay. Chalo, I'll ask you to introduce yourself. My name is Varun Khatri. I'm born and brought up in Delhi. So I'll first talk about my life in school. I completed my schooling from Ryan International School, Rohini. I'm a person who was always curious to know about new things, and I was always good with maths. So I decided to take non-med as my stream in class 11. In my spare time, I love playing table tennis and video games on my computer. I even represented my school at zonals level in table tennis. I have always been a big foodie, so that led to me to try different recipes in my kitchen. All of this changed my hobby into my passion. So that moment, I decided to pursue my graduation in something which could help me to gain more knowledge about food industry only. So I went to pursue hospitality management from AIHM Chandigarh. I landed up to the college where I wanted to be. I made a lot of friends during my college life. I used to travel to the hills and mountains in Himachal Pradesh and Uttarakhand. I even loved going for treks and other adventure sports like paragliding and river rafting. Also,
I joined the kitchen club from the first year itself, where I used to work in a team of chefs for various college events. I learned a lot about how to work in a team and how to be a leader where you face new ओके challenges. ओके सो ये सारे में ये जो आई लर्न अबाउट हाउ टू वर्क इन अ टीम और हाउ टू बी अ लीडर, ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन वाले फीचर्स ही बताने हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू पिच योर कैंडिडेचर इन ऑल द ठीक। आंसर्स, ठीक है। और जैसे तुमने स्कूल टाइम में बोला कि आई यूज्ड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, है ना, इनक्विजिटिव, वो न्यू थिंग्स बोल के काम नहीं चलेगा। अब अगर तुम वो एक लाइन जोड़ रहे हो तो यू नीड टू टेल सम न्यू थिंग्स व्हिच यू हैव एक्सप्लोर्ड, और यू कैन डायरेक्टली से आई हैड एक्सप्लोर्ड दिस अपार्ट फ्रॉम माय एकेडमिक। क्या जरूरत है ये बोलने का कि हम नया चीजों के शौकीन हैं या नया चीज एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इस तरह से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता बोलना, ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर तुम्हारे सॉरी केस टू में। इंटरप्ट सर सॉरी टू इंटरप्ट जस्ट एक चीज मुझे पूछना था। ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेटली लाइक कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए मतलब? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप सही कंटेंट बोल रहे हो तो यू कैन टेल लाइक फॉर एनी एनी मिनट्स, क्योंकि वो कंटेंट अगर किसके पास ज्यादा है तो ज्यादा देर बोलेगा, कंटेंट जिसके पास कम है वो कम बोलेगा। ऑलराइट, ठीक है सर। सो वरुण, अच्छा, ये ऋषिराज, दिस इज एन मॉक इंटरव्यू, सो if any one of you has any question you will ask it later after the interview, ठीक है। ओह सॉरी। ओके, सो इट्स अ कंटिन्यूअस फीडबैक मॉक इंटरव्यू। सो मतलब बेसिकली जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी टाइम में हम फीडबैक दे देते हैं, सो दैट कि बाद में ऐसा ना रहे कि याद ना रहे और हम एक टाइम पे उतनी सारी बातें ना बता पाए। ओके वरुण, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कैन यू असेस और कैन यू टेल व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन इंडिया? It has a huge negative impact on the hospitality sector. Like many hotels and restaurants are closed because of the COVID itself, because people were not ready to trust them due to the pandemic only, and they have lost a lot of revenue because of that. बस इतना ही। जब जब आप किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो तो उसके और भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके और भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करना होता है, जैसे मैन पावर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, है ना, अदर पीपल बेस्ड ऑन और रिलाइंग अपॉन दिस इंडस्ट्री, तो उसको साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ होटल के बारे में पूछता कि ये होटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तब तुम बोलते कि बंद हो गया, है ना, उसके रीजंस ये थे, ठीक है। तो मतलब यू कैन नॉट, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री यू विल मतलब यू विल टॉक अबाउट ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जितना भी तुम जानते हो, ठीक है। 3-4 बोलोगे तो कम से कम उस पे वो लगता है कि हाँ तुमने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक एक चीज और इसमें तुम पढ़ के रखना कि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के जो भी प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड जो है ना, कि किसी न किसी ने अपने आर्टिकल में लिख रखा होगा, अच्छे से उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि वो तुम्हारी इंडस्ट्री है ना, तो वो वी नीड टू नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, अरे मैं क्वेश्चन ही भूल गया। Okay, so the next question is, how do you, matlab, what is the market of cloud kitchen right now in India, and in with what rate it is expected to grow, and what do you see as a future of, matlab, what do you see the future of cloud kitchen in India? There is a huge market of cloud kitchen in India right now also. Even the home chefs are converting their business into a cloud kitchen itself. They are doing the tie-up with the Zomato and Swiggy or any other delivery app and starting up their business from their home itself. And like it has generated a lot of like employment also. Like the more the cloud kitchens there are, the more opportunities for a chef or any other, like it is also helping the like service sector as well, and also the hospitality sector to grow and come out from the negative impact that COVID has provided on it. थोड़ा और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा वरुण, तुम्हारे साथ ये हमेशा ये प्रॉब्लम हो रही है, Mhm. यू आर नॉट कंप्लीटिंग द आंसर। जब होम किचन मतलब क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वाई पीपल और वाई बायर आर शिफ्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू गेटिंग द थिंग्स डिलीवर्ड टू एट देयर प्लेस, है ना, बिकॉज लोगों की हैबिट अब हो रही है कि घर पे खाया। दूसरा क्या, कुकिंग हैबिट जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और आज के जो जनरेशन है
they are not having the kind of social structure that we used to have earlier कि husband कमाएगा और wife बनाएगी खाना. Now both are working, है ना. Even जैसे मतलब everybody has a number of different job, है ना, other than cooking. तो जिसको मतलब जिसको शौक है, जिसको regular habit है, वो बना पा रहा है. But otherwise people are not ready to develop cooking as an habit, है ना. They prefer to bring मतलब वो फिर तो एक तो ये एक आध डिमांड के रीजंस बता दोगे, जैसे कोविड और ये सब डिमांड के रीजंस हो गए, तो इस वजह से मार्केट विल ग्रो फर्दर. सी ऐसे बोलोगे. दूसरा, चूंकि क्लाउड किचिंग actually decreases the cost of an service provider, and that's why they are also they also reduce the price of the वो served goods. तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ेगा क्योंकि प्राइस कम होगा. तो अब बात ये आती है कि यू बीइंग फ्रॉम होटल इंडस्ट्री यू शुड नो द लिटिल डेटा अबाउट दिस, है ना. तो कितने कितने फिगर का है, किस परसेंट से बढ़ रहा है, एंड व्हाट डू यू सी एज अ फ्यूचर ऑफ क्लाउड किचन. तो ये तुम थोड़ा और सोच के बता सकते हो. मतलब 3 क्वेश्चन था ना, तो इसको थोड़ा और इस आंसर को और डेवलप करने की जरूरत है तुम्हें. ठीक है. सो द नेक्स्ट वो क्वेश्चन फॉर यू, what did you do in your मतलब in this last 2 year when COVID was there and everything was shut down and you were not having any job and you were living at home. What were your activity? What you were doing at that time? So basically, after completing my graduation, I was waiting for my offer letters, like my offer letter only. I got placed at with Jubilant Food Works in at Domino's, where I was a senior assistant manager. But like I even went to the for my post to the Jaipur, but due to my like I got COVID positive in the first week itself. So due to that, I had to come back to my hometown, leaving that job because of my health issues. So after that, the main focus was uh, my main focus was the health only. So I started working out after that, and I even reduced 15 kgs of weight after that till now. बस इतना ही. हाँ सर, यही So हुआ है. you told me every reason कि why you were sitting at home and in this last 1 year, or you told me just one thing that you did. You worked upon your health. सर तुमने बेसिकली मतलब मैंने लिखवाया. एक जगह और भी काम नहीं किया नहीं था. नहीं, you तुमने ही लिखवाया था ना कि I have tried to develop my cooking skill in हाँ Italian. तो उसको हाँ कौन सर. बोलेगा. तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ अब बट तो वो हाँ, तुम कम क्यों कर रहे हो. मतलब why are not picking the lines की जो बोलना है. जैसे मैं पूछा कि 2 साल क्या किए, मतलब कोविड पीरियड में क्या किए, तो तुमको सीधा सीधा बोलना चाहिए था कि घर बैठे फैमिली वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए, हेल्थ पे ध्यान दिए, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे ऊपर काम किए एंड इटालियन सीखा. ऐसे बोलना था. तुम उधर की कहानी बता रहे हो कि प्लेसमेंट तो उधर ही ज्यादा टाइम बता दिए. हाँ, आई हैड अ जॉब बट आई गॉट कोविड सो आई हैड टू लीव द जॉब एंड दैट देन आई वाज स्टेइंग एट होम ओनली, है ना. तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, छोटा भाई बहन है. हाँ, एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर है, वो घर पे रहता है. मतलब वो सर जॉब कर रहे हैं. ही इज 10 years elder than me. अच्छा, इस 10 ईयर है. तो तुम फैमिली के साथ टाइम बिताए, दोस्तों के साथ टाइम बिताए, घर पे रहे, टीवी देखे, ये सब बोलना होता है. इटालियन सीखे, इटालियन कुजिन सीखे, है ना. अच्छा, so matlab, there's a political question for you. So in recent times we have seen the hatred towards Pakistani and Chinese ethnicity, or not. It's the Pakistanis are the same. They are the same ethnicity which we are. But जैसे पाकिस्तानी और चाइनीज कुजीन को लेकर और होटल्स को लेकर उनके नाम को लेकर हेट्रेड है. तो बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट्स बंद किए गए हैं, या फिर जो पाकिस्तान के शहरों के नाम पे बेस्ड रेस्टोरेंट थे उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया गया. So what do you think about this event, and if given a chance, how would you tell people that this is not right? Firstly, we should not compare any religion or like to a culture or their food. Like food is a personal choice, and it should not be like come up with any religion. So if someone is have a name like Mughlai cuisine or something related to that, so people should not hate it. Basically, they should focus on the quality of the restaurant and not on the name or the religion of that person. So that people should
like analyze and act upon it. So the second part is still left. ये तो तुम्हारा ओपिनियन हो गया. सेकंड है, इफ गिवन अ चांस हाउ डू यू टेल पीपल, क्या बताओगे तुम? यही बताओगे जो तुमने अभी बोला कि कुछ और भी रीजनिंग दोगे? क्वेश्चंस पूरा पूरा जवाब देने की बात है, मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो 2 पार्ट में आंसर होना चाहिए तुम्हें. The main reason would be that there would be like no रीजन नहीं, वो discrimination. तुमको क्या बोलो, तुम ऐसे बोलोगे ना, I'll start a campaign to tell people that food is independent of the country, है ना? भले ही वो वहाँ पे डेवलप हुआ वो cuisine, but all the ingredient that we are using is Indian only, है ना? And basically it makes us more diversified. Enrichment होती है, cultural की enrichment होती है. We are not giving money or we are not giving any support to the country by buying or making these food at our place. ऐसे लोगों को बताना होगा. समझ आ रही बात? तो चलो अब एक और लास्ट, तुम ऐसे स्ट्रेस में मत आना, ठीक है? मतलब somehow वही हो जाए कि थोड़ा तुम्हें और बोलना है और थोड़ा कैटेगराइज करके बोलना है, ठीक है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. Like you told that you have done bachelor in hotel management, and this is more practice based course, है ना? But management as at the other end, management is more learning based or reading based course. So do you think that the educational or the education that you have till date is enough to do an MBA program? I believe that I have studied the basics of management and I have even worked upon it during my third year itself, as our college was the student driven college where we used to handle, like I used to handle the kitchen club on my own from my third year itself, and I used to train my juniors as well. So the responsibility was on me only, or the, you can say, the third year students only, where they used to teach how to plan, how to engage, and how to work as a team. So I think that it helped me a lot to gain my skills, and it will definitely be a benefit for me if I pursue an MBA after this. मतलब ये बेनिफिट की तो क्वेश्चन था नहीं. क्या क्वेश्चन था ये बताओ पहले तो. डू यू रिमेम्बर द क्वेश्चन कि क्या पूछा था मैंने? क्या हाँ था? सर, कि लाइक आपके मतलब हेल्प करेगा या नहीं ये कोर्स? नहीं, क्वेश्चन ये था कि जो भी एजुकेशन तुम्हारी आज तक की है, इज इट इनफ टू डू एन MBA? आई एम क्वेश्चनिंग योर करंट कैपेबिलिटी कि, या इधर आई एम सजेस्टिंग कि जो तुम अभी तक पढ़े लिखे हो, जो तुम जानते हो, मैनेजमेंट के एजुकेशन के लिए इनफ नहीं है, एंड यू नीड टू जस्टिफाई दैट. तो तुमने पहला जो बोला वो तो ठीक है कि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के जाने की तो जरूरत नहीं है. तुमको ये बताना चाहिए था कि इवन माय कॉलेज, इवन माय प्रोग्राम वाज प्रैक्टिस ओरिएंटेड, बट वी हैड टू रीड मेनी सब्जेक्ट्स, पास्ट मेनी papers and curriculums, and even it was practice oriented, but everything was theoretically defined, है ना? And since it was practice oriented within the process based organization, so I know how to relate things with each other economically या socially. ये तुम्हें पूरा तुम नहीं बोल पाते, लेकिन तुम्हें बेसिकली ये जवाब ऐसे देना था कि तुम अपनी, तुम्हारी जो नॉलेज है और जो तुम्हारी जो अब तक की एजुकेशन है या फिर जो भी ट्रेनिंग है, उसको बताना चाहिए था कि दिस, मतलब ये कहीं ना कहीं से बहुत सफिशिएंट है टू डू एन MBA. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो एन एविड रीडर. एविड रीडर मतलब तुम पढ़ते तो होगे ना बुक्स वगैरह, मूवी देखते होगे, नहीं देखते? रीडर तो नहीं है अच्छा, रीडर नहीं हो, मतलब कुछ तो पढ़ते रहते होगे ना, क्या पढ़ते हो? सर, अब तो न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ उसके अलावा. हाँ तो ठीक है, मतलब योर जनरल अवेयरनेस इज गुड, योर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज गुड, मतलब कॉम्प्रिहेंशन इज गुड, योर मैथमेटिक्स इज गुड, विच आई नो, मतलब आई कैन वाउच फॉर दैट. तो ये सब अच्छे होने की वजह से यू कैन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट और वेरी गुड लर्नर एट MBA प्रोग्राम. बस इतना ही बोलना था. अब तुम सर घूमते वो फिरते पता क्या, क्या होता है, वही जैसे अभी वैसे बता रहे थे, मैं भी वो जो होता है ना, पहले दिमाग में आ गया तो वही फ्लो में फिर. हाँ वो लास्ट में घूमते घूमते क्या करने लगे, दिस विल गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट. हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि MBA हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, हम ये पूछ रहे थे, हम एक्चुअली क्वेश्चन मार्क दे रहे थे कि तुम्हारी नॉलेज तो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है. नाउ यू हैड टू डिफेंड इट, तो उसको डिफेंड करना था, ठीक है?
तो इसी तरीके से है। चलो एक बार और हम थोड़ा सा बात करेंगे तुमसे। कल कब इंटरव्यू है? इंटरव्यू नहीं है, परसों इंटरव्यू। अच्छा ठीक है, तो कल एक बार और बात करेंगे।